आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल A rainy day. A rainy day is a day in which it rains all day long. In our country, a rainy day is a common scene. A rainy day makes the climate fresh and pleasant. It brings in a sigh of relief from the scorching heat. It is welcomed mostly by the people of all ages, including kids, adults, and older people. It is a blessing for trees, plants, birds, animals, and people during the summer. Trees and plants look very fresh, colorful, and refreshing after a shower. Rainy day is essential for farmers as it helps in the growth of crops. Many people like getting drenched in the rain. Rainy day can also offer a fun break to students as most of the schools declare holiday due to heavy rain. Water becomes abundant, rivers, canals, and water bodies get swelled up on a rainy day. People use umbrellas to travel in the rain and remain dry. But there are also some wrong sides to a rainy day as excess rain can destroy several crops and fruits. A rainy day can also create a little trouble for people who are poor or have to travel. थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे देश में बारिश का दिन एक कॉमन सीन है। बारिश का दिन मौसम को सुहावना बना देता है, जिससे हमें तेज गर्मी से राहत मिलती है। सभी एज के लोग, चाहे वे बच्चे हों, एडल्ट्स हों या बूढ़े लोग हों, बारिश के दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गर्मी के मौसम में बारिश ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स के लिए बहुत बढ़िया होती है। प्लांट्स एंड ट्रीज बहुत फ्रेश दिखाई देने लग पड़ते हैं। बारिश का दिन किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बारिश फसलों की ग्रोथ में मदद करती है। कई लोग बारिश में भीगना पसंद करते हैं। बारिश के दिन का बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण बहुत से स्कूल हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं। बारिश के कारण रिवर्स, कैनाल्स पानी से भर जाते हैं। लोग ट्रैवल करते समय एम्ब्रेलास को यूज़ करते हैं ताकि वह भीग ना जाएं। बारिश के दिन के कारण कुछ लोगों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश कई फसलों और फ्रूट्स को डैमेज कर देती है। बारिश का दिन गरीब लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। उन लोगों को भी मुश्किल होती है जिन्होंने ट्रैवल करना होता है। ठीक है, अभी आप इस आर्टिकल को नोट कर लीजिए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।